Yeah, good evening, guys. So we need to start the session on classification. Okay. So the previous one is all about regulation, right? So the linear and the logistic regulation. Now this session is all about the classification. Classification, the name itself, we are having the definition. Classification के नाम में हमारा एक definition आ जाता है, guys. ठीक है? So let's go to start with the classification. Just a minute, पूरे delete कर देते हैं. Yeah. Here we will do with the classification. Before more deep diving into the classification, we need to understand about this thing. So the training data, what is happening now? Apple box is there. Training set 2 is all about the banana. Learn to draw a line between the boxes using features. Okay, got it. Features A, round, shape. Features B, color, red, green, banana, yellow, banana, long, curve. तो क्या हो रहा है क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है ना गाइस कमिंग टू द क्लासिफिकेशन you know that without data we can't do anything. So coming to the input data, we are having total two data. So the first one is all about apple, second one is all about banana. After that what we are doing, we are setting into the training part. These two are into the training part. हम लोग इसको ट्रेन कर रहे हैं राइट. सो इन मशीन लर्निंग आई टोल्ड यू दैट ट्रेन करते हैं अपन पहले, ठीक है, डेटा को. So here also we are doing the same thing. We are going with the training part. Once we done with the training part, we will go with the features. फीचर्स इंजीनियरिंग का भी अपन एक क्लास लेंगे, कोई टेंशन नहीं उसका, ठीक है. फीचर्स, सो तो एप्पल का फीचर्स क्या हो सकता है ना, कलर, कलर होगा, रेड होगा आपका, शेप होगा राउंड शेप लाइक दैट. कमिंग टू द फीचर्स नंबर 2, बनाना, बनाना का आपका येलो कलर, सॉरी इट शुड बी येलो कलर, इट शुड बी इन द कर्व शेप, राइट, ठीक है. तो ये पूरे अलग अलग सिनेरियो से अपन समझ रहे हैं कि हमारा एप्पल कैसा दिखता है, बनाना कैसा दिखता है, राइट, based on their features. Guys, again and again I was talking about here, not I was talking about the data, here I was talking about the features of a data. ठीक है, डेटा के फीचर्स के बारे में अपन पढ़ रहे ताकि अपन उस फीचर्स की अंडरस्टैंडेबल की पता अपन डेटा के बारे में समझेंगे. थ्रू फीचर्स वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डेटा, नॉट वी आर डायरेक्टली मीट अप विद द डेटा. गॉट इट. ताकि अपन डेटा के बारे में नहीं पढ़ रहे, थ्रू फीचर्स वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डेटा. दिस थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इन योर पूरे. यहाँ तक समझ गए. अब यहाँ तक समझने के बाद आपको ये चीज़ और समझना है क्लासिफिकेशन में, वो यही है कि न्यू डेटा. सो कमिंग टू माई इनपुट डेटा, आई हैव एप्पल एंड बनाना. इफ माई न्यू डेटा इज ऑरेंज, so my question is, what you are going to predict this orange is an apple, banana or orange? क्या आप बोलोगे? आप ऑरेंज को आप एप्पल बोलोगे, बनाना बोलोगे या फिर ऑरेंज बोलोगे? ऑरेंज की स्पेलिंग गलत है मुझे मालूम है, ठीक है, तो कुछ नहीं कर सकते आप. ऐसे गलत है ही सही है, यहाँ पे कुछ नहीं है, जा. है या इट्स रॉन्ग, इट्स अ रॉन्ग स्पेलिंग, चलेगा. So now we are having to input data like apple and banana, guys. So coming to the new data is orange. Orange is my new data. So I can say orange is an apple. Don't say orange is orange. Don't say orange is orange because मेरे मशीन के पास input data सिर्फ दो ही चीज का, एप्पल और बनाना. Machine is having no data which is regarding orange. Machine is having the data regarding apple and banana. Got it? So you can say simply orange is an apple because the feature is shape. The shape is circle. Got it? समझ गए? If my another new data is cucumber. So you can say simple, this cucumber is a banana because the shape is curved. ठीक है? Got it? Now, guys, apple and banana मैंने बोला था. Now let's remove the banana. Let's take orange as our input. Right? ट्रेनिंग हो गया. ट्रेनिंग होने के बाद अपन टेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं. तो टेस्टिंग में क्या हो रहा है ना गाइस, ट्रेनिंग टेस्टिंग क्या हो रहा है, तो आप मेरे प्रीवियस सेशन में जाके आप सुपरवाइज अनसुपरवाइज के बारे में पढ़ो, फिर आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि क्लासिफिकेशन में क्या होता है ट्रेनिंग टेस्टिंग, ठीक है. सो दैट एप्पल एंड ऑरेंज आर माई इनपुट डेटा. नाउ कमिंग टू माई न्यू डेटा इज ऑल अबाउट guava, ठीक है, guava. Now tell me, guava is an apple or guava is an orange? Coming to the shape, they both are same, circle. Coming to the color, green color. Orange is orange color, apple is a red color. Red, orange, green are not matching, but something is matching. What is the matching? Another feature is the matching. What is that features? We can cut apple, we can peel the orange, but we can't peel the guava.
What we can do with guava? We can cut the guava. Yes, we can cut the guava, right? So हमारे पास input data में क्या क्या था? We are having the input data like apple or orange. We can cut it, we can peel it. If coming to the new data is guava, we can cut it, not peel it. So based on these cutting features, we can say guava is an apple. This is a classification. This is a classification. Classification is done by the so many input data. We are going to understand about the data. If you are not having the new data related in your input, मतलब जो भी input data है और new data का information input data में नहीं है, so machine is going to go with the similarity answers like guava. We don't have any input regarding guava, so machine is simply going with the similarity. The similar answer is apple, not an orange, right? So this is all about the classification, how classification is different from the regression. Without classification, without regression, we can't do anything, guys. Why we can't do anything? It's very simple. यहाँ पे आप देख सकते हो क्या होता है differences. Where is that difference between Talia? Just a minute, guys. Yes. So coming to the classification, output is all about category. Coming to the regression, output is always talk about the number. Classification spam, not spam. Okay. A regression is of keywords, a percentage of the score. Coming to the classification, it is all about the decision boundary. The regression is all about the, it is a curve one split line. It will always talk about the difference, right? So this is all about the classification. I hope you understand about this class. Let's meet tomorrow, guys.